गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज आम डिस्कसन करवा एसक्यूएल कमांड्स उपरे। कालीर वीडियो रे आम एसक्यूएल बेसिक उपर डिस्कसन करथिले। आज एसक्यूएल कमांड उपरे ब्रीफली डिस्कसन करवा। तो एसक्यूएल कमांड आम कौन कौन पढ़ी? आम एसक्यूएल कमांड पढ़ी डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल एंड डीक्यूएल। तो आज हम डिस्कस करवा डीडीएल कमांड ऊपर। डीडीएल ऊपर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज ऊपर। तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज केते प्रकार जो कमांड्स हम यूज करूचे तार काम कौन आउ तार रिलेटेड किसी एमसीक्यूज एग्जाम रिलेटेड आम सेटा डिस्कस करवा। तो चलतु आम हमर डीडीएल कमांड ऊपर ब्रीफली डिस्कस करवा। तो आम पढ़ा एसक्यूएल ट्यूटोरियल पार्ट 2। आज एसक्यूएल कमांड्स ऊपर डीडीएल, डीएमएल, टीसीएल, डीक्यूएल एंड टीसीएल। डीडीएल अंडर कौन कौन जाऊँगी? क्रिएट कमांड, ड्रॉप कमांड, अल्टर कमांड, ट्रंकेट कमांड एंड रीनेम। देन डीडीएल इन एसक्यूएल। तो डीडीएल एसक्यूएल रे कौन? Data definition language is a subset of SQL used to define and manage database structures such as schemas, tables, index and views. Then key DDL commands. तो DDL commands गुड़ाक हम यूज करूचे command with its description. क्रिएट कमांड आम कौन पे यूज करूचे? क्रिएट्स ए न्यू टेबल डाटाबेस इंडेक्स ऑन ए टेबल। तो क्रिएट कमांडटा यूज करा होची नुआ किसी क्रिएट डाटाबेस क्रिएट करिया पे, टेबल क्रिएट करिया पे, टेबल रे इंडेक्स क्रिएट करिया पे आम बेसिकली क्रिएट कमांड को यूज करूचे। देन आम आसबा ड्रॉप कमांड। तो ड्रॉप कमांडटा कौन पे यूज करा होची? यूज टू डिलीट एन एग्जिस्टिंग डाटाबेस ऑब्जेक्ट। ड्रॉप कमांडटा यूज करा जाए गोटे एग्जिस्टिंग डाटाबेस को डिलीट करिया पे, डाटाबेस ऑब्जेक्ट को डिलीट करिया पे। देन आम आसबा अल्टर कमांड आम कौन पे यूज करूचे? अल्टर कमांड आम कौन पे यूज करूचे? Alter used to modify the structure of an existing database object. Used to modify the structure of an existing database object. You can use alter table to add, drop or modify columns or to add and remove constraints. तो बेसिकली alter टा हम यूज करूचे किसी आड टेबल रे किसी जिनस आड करिबा पई, किसी जिनस को डिलीट करिबा पई, किसी जिनस को मॉडिफाई करी अपडेट करिबा पई, किसी कंस्ट्रेंट को रिमूव करिबा पई। तो सेतिर जो अल्टरेशन आमे करूचे तो सेही जिनसटा अल्टर कमांड द्वारा पॉसिबल हे पारुचे। तो आमे आसीबा ट्रंकेट को। तो ट्रंकेट कमांड रो यूजेस कौन? यूज टू रिमूव ऑल records from a table including space allocated for the records. Used to remove all records from a table including space allocated for the records. तो ट्रंकेट यूज करा जाए गोटे टेबल रा ऑल रिकॉर्ड को विथ इंक्लूडिंग स्पेस जोटा भी अच्छी ताको भी रिमूव करिया पे ट्रंकेट कमांड यूज करा जाए। अनलाइक ड्रॉप, it doesn't delete the table structure itself, making it a faster way to empty a table than using delete with nowhere clause. तो आमे ड्रॉप कमांड रे आमे टेबल रो स्ट्रक्चर टा को टोटली डिलीट कर दोथले, रिमूव कर दोथले, किंतु आमे ट्रंकेट कमांड रे टेबल रे थिबा डाटा गुडी को रिकॉर्ड्स गुडी को फास्टर वे रे एम्प्टी करि परिबा, माने रिमूव करि परिबा देन यूजिंग डिलीट विथ नो वेयर क्लॉज। तो डिलीट कमांड रे हम जो वेयर क्लॉज यूज करके रिमूव करूचे तो ट्रंकेट रे सेटा यूज न करके मध्य हम गोटे टेबल टाको टेबल रा ऑल रिकॉर्ड्स को स्पीड फास्टर वे रे रिमूव करि परिबा। देन नाम आसीबा रीनेम कमांड को। तो
तो रिनेम कमांड रो यूज कौन यूज टू रिनेम एन एक्जिस्टिंग डाटाबेस ऑब्जेक्ट तो गोटे डाटाबेस रे एक्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट जोटा अच्छे ताको रिनेम करबा पई हमें रिनेम कमांड यूज करि पारछे फॉर एग्जांपल रिनेम टेबल कैन बी यूज टू चेंज द नेम ऑफ ए टेबल तो टेबल रो ना ऑलरेडी गोटे दिया हेची तो सेही टेबल रो ना टी को चेंज करबा पई हमें रिनेम कमांड टी को यूज करूचे तो हमें आसीबा की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीडीएल तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज रो किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स अछि तो से की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कशन करबा डीडीएल कमांड्स टेक इफेक्ट इमीडिएटली एंड कैंट बी रोल्ड बैक तो इमीडिएट इफेक्ट रे कोन कराउची डीडीएल कमांड्स टेक इफेक्ट इमीडिएटली एंड कैंट बी रोल्ड बैक तो देन हमें आसले डाटाबेस स्ट्रक्चर सेटा गोटे की कैरेक्टरिस्टिक्स डीडीएल रो they deal with the schema which is the blueprint of the database. This is in contrast to data manipulation language DML which is used to manage the data within the schema. Example कौन insert update delete then हमें आसीबा हमरो last characteristics को automatic commit the DDL operations are typically committed automatically meaning they are saved to the database and can't be easily undone तो वर्तमान हमें डिस्कस करबा हमरा फर्स्ट MCQ क्वेश्चन को तो which of the following is a DDL command तो ऑप्शन कौन सिलेक्ट अल्टर इंसर्ट कमिट तो आमर डीडीएल कमांड कौन हम अल्टर आंसर आमर होची अल्टर ऑप्शन सी देन आम सेकंड क्वेश्चन को आसबा व्हिच डीडीएल कमांड इज यूज्ड टू डिलीट ए टेबल फ्रॉम द डाटाबेस तो व्हिच डीडीएल कमांड इज यूज्ड टू डिलीट ए टेबल फ्रॉम द डाटाबेस तो ऑप्शन कौन रहउची डिलीट ड्रॉप ट्रंकेट रिमूव डिलीट ड्रॉप ट्रंकेट रिमूव तो आंसर होची सी ऑप्शन ड्रॉप देन हमें आसबा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन को द क्रिएट कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट कमांड कौन पई यूज करा जाए ऑप्शन होची ऐड न्यू रोज टू ए टेबल मॉडिफाई एक्जिस्टिंग डाटा इन ए टेबल क्रिएट ए न्यू डाटाबेस ऑब्जेक्ट डिलीट डाटाबेस ऑब्जेक्ट तो हमर आंसर कौन हबो आंसर हबो सी क्रिएट ए न्यू डाटाबेस ऑब्जेक्ट गोटे न्यू डाटाबेस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करिया पई हमें क्रिएट कमांड यूज करे देन हमें आसीबा हमर नेक्स्ट क्वेश्चन को टू ऐड न्यू कॉलम टू एन एक्जिस्टिंग टेबल यू वुड यूज द कमांड तो को कमांड हमें यूज करबा गोटे नुआ कॉलम ऐड करिया पई गोटे एक्जिस्टिंग टेबल गोटे डाटाबेस रे तो फर्स्ट हमर ऑप्शन कोन ऐड कॉलम अपडेट मॉडिफाई अल्टर टेबल तो हमारा आंसर हबो अल्टर टेबल हम लास्ट क्वेश्चन आज डिस्कस करबा व्हिच कमांड ऑफ डीडीएल इज यूज्ड टू गिव ए न्यू नेम टू डाटाबेस ऑब्जेक्ट तो को कमांड डीडीएल रा हम यूज करे गोटे नुआ नेम दबा पई डाटाबेस ऑब्जेक्ट रो तो ऑप्शन कोन चेंज अपडेट रीनेम मॉडिफाई चेंज अपडेट रीनेम मॉडिफाई तो ये चार्टा भितर हमर आंसर कोन हबो आंसर हबो सी रीनेम आंसर हबो रीनेम रीनेम कमांड को यूज करके हमें गोटे डाटाबेस ऑब्जेक्ट रो नुआ नाटे देई परिबा थैंक यू फॉर वाचिंग सब्सक्राइब फॉर मोर सच videos related to the SQL like share and subscribe